Namaskar. I am Dr. Himanshu Das, the Director of National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, Dehradun. This is a tribute to our most beloved, respected, honorable, departing soul, our most dear A.K. Mittal ji. NIEPVD Dehradun has been involved right from the outset in multifarious activities for education, rehabilitation, and empowerment of persons with visual disabilities. A.K. Mittal ji, as a director of NIEPVD, gave a formidable stare to many such activities during his tenure in 1980s. Ever since then, he has been constantly involved as a mentor and as a forerunner to give a push to these activities. His constant guidance has been of great value for the Institute and each of its officials. The testimony of this can be presented with his speech delivered during a 3-day symposium on moving forward to inclusive education, conducted 28th to 30th July 2020, organized by NIEPVD in collaboration with Sharda University and SEMCA. These valuable words are his last contribution for our institute in the academic sphere, which stands testimony of his exceptional knowledge and understanding of incorporating children with visual impairment in education. His scholarly views and unparalleled experience with wisdom are quite evident in his speech, which we put up for you all as a tribute to Shri A.K. Mittal ji. Thank you. To speak on the emerged challenges of inclusive education in context to present COVID-19 scenario, we have with us Mr. A.K. Mittal, Secretary General of the World Blind Union 2016. Prior to this, Sir was Treasurer at WBU from 2008 till 2016. Sir, we are glad to introduce you to our audience. Mr. Mittal has a master's degree in English and education, as well as a diploma in education for the blind from the United States. He has held up top administrative and leadership positions in the government and voluntary organizations for over 40 years. Sir was the director of the Apex government organization working with the blind in the country for over 22 years. In this capacity, he has overseen implementation of financial policies and developmental activities of the blind with a budget of over $1 million in a year and a term of over 200 professional colleagues and staff. He was also the head of a reputed private school for the blind and a teacher training institute for about 15 years. Mr. Mittal has also been an integral part of the self-help movement for the blind for more than 30 years. Mr. Mittal is passionate about learning and promotion of Braille, access to quality education for all blind and partially sighted children, and about ensuring involvement of developing countries in WBU work. Sir, I would request you to address and guide our eager audience. Sir, please, we welcome you. Good afternoon, friends. Thank you very much to begin with for your kind words. Now, I'm happy to be associated with your present symposium. I feel happy because the theme chosen for your symposium, moving forward to inclusive education post-COVID-19 strategies, is most relevant and topical. The theme, as also the sub-theme assigned to me, has two important components: inclusive education and post-COVID-19 scenario. Now, each of these elements, viewed singly, has its own share of challenges and perspectives, but combined together, these constitute a clarion call for human ingenuity, resourcefulness, and coordinated action. Now, I shall briefly introduce you to the two organizations with which I am associated, not for any
publicity or ostentation purposes, but because of their work, which is in many ways related to inclusive education. I shall then present a few insights into some recent international documents dealing with inclusive education, which have relevance for the present day COVID-19 scenario. And finally, we shall talk of some specific present day challenges and deliberate upon how best those challenges can be addressed. तो तीन चार बातें हम अपने इस चर्चा में हमारा करेंगे. पहले तो मैं बहुत संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं उन दो संगठनों के विषय में जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं यहाँ. दूसरे दो बहुत महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज हैं जो अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुए हैं. आप में से बहुत से रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो विशेष रूप से उन रिसर्च स्कॉलर्स के लिए उन डॉक्यूमेंट्स की स्पेशल सिग्निफिकेंस हो सकती है. फिर हम स्पेशल चैलेंजेस की बात करेंगे और उन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया जाता है इसके ऊपर भी आएंगे. तो चलिए, we begin now. Before I begin, my apologies for I'm not presenting any slides or transparencies for you to see. So please bear with me and imagine for some minutes how those of us who cannot see also comprehend through listening. आपसे क्षमा याचना इस बात की है कि मैं slides और transparencies कोई आपके सामने नहीं रख पा रहा हूँ. Let's begin with a short introduction on my two organizations. The name of my international organization, the World Blind Union, WBU, sometimes creates some confusion and tends to denote that it is some kind of a trade or labor union. Not so at all. It is a union because it was the outcome of the unification of two separate world organizations then working for the blind. Those were the World Council for the Welfare of the Blind and the International Federation of the Blind. These two organizations united together in 1984 and thus came into being the World Blind Union, and hence the term union. WBU today represents 253 million blind and low vision persons and their national organizations from about 190 countries. WBU works actively in forcefully advocating for the rights and entitlements of blind and low vision persons across different world platforms. It was closely associated with the drafting and coming into force of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, UNCRPD, and I hope all of our participants have at least heard about this convention. It was also instrumental in drafting and adoption of the International Marrakesh Copyright Treaty, which was approved on 27th May 2013 at the WIPO Diplomatic Conference in Marrakesh. The treaty facilitated removal of copyright restrictions at the international level on published works for the benefit of the visually impaired and other print disabled persons. This milestone accomplishment helps in providing a fillip to the education of the visually impaired and other print disabled persons. WBU is also represented on the stakeholder group of persons with disabilities, which keeps a watch over SDG implementation. SDG, probably you all know, Sustainable Development Goals. There are 17 Sustainable Development Goals. So it keeps a watch for implementation for persons with disabilities and closely interacts with the United Nations High-Level Political Forum, HLPF. This forum also keeps a watch on implementation of SWGs in general. As regards my national organization, All India Confederation of the Blind, this is a premier self-help national organization of the blind, and it is our mandate to uphold and promote the rights and interests of children and adults with visual impairment. We have about 25 blindness organizations affiliated to our confederation from different parts of the country, representing a very large number
of blind persons. Our Confederation's services are widely recognized and acclaimed throughout the country. The Government of India, through the Ministry of Social Justice and Empowerment, have conferred upon this Confederation 3 prestigious national awards, including one as the best NGO in the disability sector in the country. The Confederation also enjoys strong support and recognition at the international level and is affiliated to WBU. The Confederation is closely associated with work related to inclusive education, including a research study carried out on the subject, which involved a sample of about 200 visually impaired children from 10 states. We propose to undertake another such study next year. तो 2 संगठनों का बहुत संक्षेप में परिचय सिर्फ इतना है कि वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन दृष्टिबाधित व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संगठन है। ये विश्व भर में जो 253 मिलियन दृष्टिबाधित लोग हैं उनको एक आवाज प्रदान करता है, उनकी वॉइस है। और वर्ल्ड लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के अधिकारों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनको सही स्थान सम्मान प्राप्त कराने के लिए अलग अलग स्तरों पर कार्य करता है, एडवोकेसी का कार्य करता है और बहुत से संगठनों से संबंधित है। जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा राष्ट्रीय स्तर पर है उसका नाम है ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। ये भी एक दृष्टिहीनों का बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्तर पर, और 25 हमारे राज्य स्तर के दृष्टिहीनों के संगठन है जो इस संगठन से संबंधित है। हमारा संगठन है ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। इंक्लूसिव एजुकेशन से भी ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड संबंधित रहा है। एक बड़ा शोध कार्य पहले कर चुका है इंक्लूसिव एजुकेशन पर, जिसमें 200 दृष्टिबाधित बच्चों पर अध्ययन किया गया था 10 राज्यों से। इसी तरह का एक और शोध कार्य हम अगले वर्ष करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। Now, so much then about our 2 organizations. Now, some thoughts about inclusive education. Your symposium takes place in the background of the launch only last month of 2 important international documents on inclusive education. On 23rd June was launched the UNESCO Global Education Monitoring GEM Report 2020, which is titled All Means All, Learner Diversity is a Strength to be Celebrated. The report has relevance in today's COVID-19 related challenges and makes 10 important recommendations, which I'll quickly read out. तो अब हम 2 महत्वपूर्ण इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जो पिछले हफ्ते ही जिनको लॉन्च किया गया है। जो आप रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए और बाकी लोगों के लिए भी ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो इनका विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। इनमें से एक है यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 जो 23 जून को ही जिसका विमोचन किया गया है। इसमें ये जो चैलेंजेस हैं कोविड-19 के, इसमें इनका बहुत महत्व है। 10 बड़े इन्होंने सिफारिशें की हैं। Let's quickly read through those 10 recommendations. Number 1, widen the understanding of inclusive education. They say this is not about setting up an inclusive education department. Rather, it is about not discriminating against anyone, not rejecting anyone, making all reasonable accommodations to cater for diverse needs towards equality. ये बहुत बड़ा, इसी को अगर आप समझ लें, एक बड़ी सिफारिश है, किसी को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, रीजनेबल अकोमोडेशन सबको दी जाएगी। रीजनेबल अकोमोडेशन मतलब जिसके लिए जो सुविधाएं, जो आवश्यक प्रबंध, आयोजन आवश्यक है, वो किए जाएंगे शिक्षा में। Number 2, target financing to those left behind. Governments need a twin-track approach that allocates general funding to foster an inclusive learning environment for all learners, as well as
targeted funding to follow the furthest behind as early as possible. बहुत अच्छी बात की गई है कि आर्थिक साधन उपलब्ध किए जाएं सरकार की तरफ से, विशेष रूप से जो सबसे पीछे रह गए हैं, पिछड़े हो गए हैं, उनको आगे लाने के लिए, जो कि आप जानते हैं आजकल चलता है लीविंग nobody behind, leaving no one behind. Third, share experience and resources. Mechanisms and activities and incentives are needed to move them flexibly to ensure that specialist expertise supports mainstream schools and non-formal education settings. तीसरी बात, मतलब जो एक्सपर्टीज अवेलेबल है, जो विशेषता अवेलेबल है, विशेषज्ञ साधन अवेलेबल हैं, उनका भी उपयोग किया जाए, जो कि जो साधन अब उपलब्ध नहीं है स्कूलों में, उनको एक तरह से समृद्ध किया जाए. Number 4, engage in meaningful consultation with communities and parents. Communities और parents के साथ meaningful consultation किया जाए, परामर्श किया जाए, जिससे कि उनको भी, पेरेंट्स को और फैमिलीज को भी हिस्सा मिल सके कम्युनिटी स्कूल के कार्यों में. Number 5, ensure cooperation across government departments, sectors and tiers. That means central governments need to ensure human and financial support for local governments to carry out clearly defined inclusive education mandates. देखिए, सहयोग, समायोजन और कोऑर्डिनेशन की बात की है. सरकार के विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न विभागों पर कोऑर्डिनेशन रहे, समन्वय रहे, तभी काम होगा. वरना एक मिनिस्ट्री कह देती है कि ये मेरा काम नहीं है, दूसरी मिनिस्ट्री कह देती है नहीं, ये उसका काम है. Number 6, make space. जरा इस पे भी ध्यान दीजिएगा. Number 6, make space for non-government actors to challenge and fill gaps. Government should create conditions enabling NGOs to monitor fulfillment of government commitments and stand up for those excluded from education. जो NGOs है, मेरा जैसा NGO है, अमर ज्योति कई चर्चा मैडम की थी, हम सब NGOs हैं. इनको प्रमुख स्थान मिलना चाहिए सरकार के साथ बातचीत में और इंक्लूसिव एजुकेशन को आगे बढ़ाने में. इसकी चर्चा और थोड़ी देर में करेंगे. Number 7, apply universal design. Ensure that inclusive systems fulfill every learner's potential. Assessment should be formative and allow students to demonstrate learning in a variety of ways. School infrastructure should not exclude anyone, and the huge potential of technology should be exploited. This has special relevance, in my opinion, in our present scenario affected by restrictions due to COVID-19. देखिए, टेक्नोलॉजी के अधिक से अधिक, विशाल टेक्नोलॉजी है अब चारों ओर, उसके अधिक से अधिक उपयोग पर जोर दिया गया है. जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल का भवन है, स्कूल की दूसरी सुविधाएं हैं, वो सब उपलब्ध होने चाहिए सभी बच्चों के लिए, इस पर जोर दिया गया है. ये जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, इसका आज के हमारे कोविड-19 के संदर्भ में विशेष महत्व हो जाता है, जैसा हम आगे देखेंगे. Number 8, prepare, empower and motivate the education workforce. शिक्षा से संबंधित सभी कार्य करने वाले लोगों को प्रेरित किया जाए, सशक्त किया जाए. All teachers should be prepared to teach all students. This is to be noted for today's situation also. Also relevant is the recommendation that head teachers should be prepared to implement and communicate an inclusive school ethos. केवल टीचर्स को ही नहीं, जो हेड टीचर्स हैं, विद्यालय के प्रमुख हैं, उनको भी प्रेरित किया जाना चाहिए कि वो इस इंक्लूसिव एजुकेशन के वातावरण को आगे ले जाएं. आजकल ये विशेष महत्व है. जब तक हमारे स्कूल्स के हेड्स हमारी बात को नहीं समझेंगे, तब कोविड-19 से संबंधित समस्याओं को भी हम आसानी से दूर नहीं कर सकेंगे. Number 9, collect data on inclusion with attention and respect. This has to be carefully addressed these days when such data is all the more crucial. Avoid stigmatization or labeling. Administrative systems should aim to collect data for aid planning and budgeting in provision of inclusive education services in the present scenario. Data collect किया जाना बहुत जरूरी है कि बच्चों की स्थिति क्या है. डेटा के आधार पर ही ठीक से बजटिंग हो सकती है, ठीक से सहायता की प्रबंध हो सकता है. ये जो डेटा कलेक्शन है, इसका भी आजकल बहुत महत्वपूर्ण है.
अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। और नंबर 10, लर्न फ्रॉम पियर्स, एक दूसरे से सीखें। मच कैन बी लर्न फ्रॉम शेयरिंग एक्सपीरियंसेस थ्रू टीचर नेटवर्क्स, नेशनल forums and regional and global platforms. तो ये बातें यूनेस्को रिपोर्ट के बारे में है, जेम, GEM। आप इसको पढ़ना चाहें तो यूनेस्को की वेबसाइट पे ये पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। मैंने 10 इसकी जो मुख्य सिफारिशें हैं उनकी चर्चा यहाँ संक्षेप में करने की कोशिश की है। Now, you might recall that in my earlier remarks, I had referred to two major just released international documents. We have already covered the first of these, and we now come to the second. This is a Global Inclusive Education Flagship Report of International Disability Alliance, IDA. The report was launched on June 25, 2020. Before proceeding further, a word about IDA would be in place. IDA was established in 1999 and is a network of 8 global and 6 regional organizations of persons with disabilities, that is OPDs. IDA's unique composition as a network of international OPDs allows it to act as an authoritative and representative voice of persons with disabilities in the UN system, representing approximately 1 billion persons with disabilities. 1 billion persons with disabilities worldwide. The report is titled, What an Inclusive, Equitable, Quality Education Means to Us. The report has been developed as part of the Inclusive Education Flagship Initiative of the International Disability Alliance, IDA, which is a component of the Disability Catalyst Program funded by the United Kingdom's Department for International Development. Sorry, going rather fast. Time is short. The task of preparing the report was led by the IDA Inclusive Education Task Team, including a representative from WPU, and informed by the experience of national organizations of persons with disabilities. तो अगला जो डॉक्यूमेंट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो एक फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन 2020। 25 जून 2020 को इसका विमोचन किया गया है और ये रिपोर्ट तैयार की गई है एक विकलांग संगठनों के शीर्ष संगठन से, संगठनों के संगठन द्वारा। उस संगठनों के संगठन का नाम है इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस। संगठनों का संगठन क्यों? क्योंकि ये जो इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस या आईडीए, आइडा कह लें, आइडा है, इसके सदस्य हैं 8 इंटरनेशनल डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस और 6 रीजनल डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस। और ये जो आईडीए है ये प्रतिनिधित्व करता है यूनाइटेड नेशंस और दूसरे स्तरों पर दुनिया भर की करीब 1 अरब जो संख्या है विकलांग व्यक्तियों की। तो इतना बड़ा प्रतिनिधित्व करने का ये संगठन है और ये रिपोर्ट बनाई गई है 4 सदस्यों की एक टीम की तरफ से। उस टीम में हमारे वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन का भी एक सदस्य सम्मिलित था। This global reports present the work and views of the International Disability Alliance on how to achieve Sustainable Development Goal 4, which is ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all, and do so in compliance with the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, especially respecting its Article 24 on the rights of all learners with disabilities. तो ये रिपोर्ट क्या है? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उन लक्ष्य में लक्ष्य 4 है, गोल 4 है, जो शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा कैसी हो? केवल ऐसी नहीं कि चुग्गी के स्कूलों में जमीन पे बैठा दिया बच्चों।
शिक्षा ऐसी हो जो इक्विटेबल हो, क्वालिटी वाली हो और इंक्लूसिव, और उसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये उद्देश्य है SDG 4। उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है विकलांग बच्चों के लिए, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। काहे के संदर्भ में? UNCRPD के आर्टिकल 24 के संदर्भ। आर्टिकल 24 क्या है UNCRPD का? उसमें शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं विकलांग बच्चों के, उनकी चर्चा की गई। ए क्रिटिकल मैसेज ऑफ दिस रिपोर्ट, पंकज साहब मैं टाइम नहीं देख रहा हूं सर कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू। A critical message of this report is that an inclusive education system is the only way to achieve SDG 4 for all children, including children and youth with disabilities, whomever and wherever they are. ये खास बात है। देखिए, खास इसका मैसेज ये है कि SDG 4 को प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम है इंक्लूसिव एजुकेशन। सभी बच्चों के लिए, चाहे वो जो भी हो और कहीं भी हो, बच्चों और युवकों के लिए, फॉर ऑल चिल्ड्रन, जिसमें विकलांग बच्चे भी शामिल हैं। The report lays down 4 minimum conditions required for inclusion for all children and youths, including children, youths with disabilities in education. 4 शर्तें दी गई है इंक्लूजन की। आप लोग बात कर रहे थे कुछ समय पहले कि इंक्लूजन कैसे होगा। इंक्लूजन अगर कराना है तो 4 बातें जरूर होनी है। आदर्श सी लगती है पर जरा देखिए। 1, all children or learners have access to quality education in schools where their inclusion requirements are met. पहली बात यह है, सभी बच्चों को अवसर मिलना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन का, क्वालिटी एजुकेशन का, ऐसे स्कूलों में जहां इंक्लूजन संबंधित उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। Number 2, all teachers are equipped to ensure that all their students participate in quality learning. सभी टीचर्स ने कोशिश करनी है, उनको इस प्रकार से तैयारी होनी चाहिए कि वो इंश्योर करें कि सभी बच्चे विकलांग समेत स्कूल की सभी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करें और उन्हें क्वालिटी लर्निंग मिले। ये है इंक्लूसिव एजुकेशन। तीसरी बात, वेल रिसोर्स्ड सपोर्ट सर्विसेज एंड रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू असिस्ट ऑल स्कूल्स एंड ऑल टीचर्स to provide inclusive and effective learning to all learners, including those with disabilities. कि साधन उपलब्ध होने चाहिए जिससे कि और इस तरह की तकनीकें उपलब्ध होनी चाहिए जिससे प्रभावकारी अधिगम हो सके सभी बच्चों के लिए, जिसमें विकलांग बच्चे भी सम्मिलित हो। All students succeed in reaching their full academic and social potential with learning outcomes measured against their own wishes, plans and benchmark. कि भाई सभी बच्चों को, जिसमें विकलांग बच्चे भी शामिल हैं, सफलता मिलनी चाहिए अपनी अधिक से अधिक जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, सामाजिक क्षमताएं हैं, उनको प्राप्त करने का और सभी लर्निंग आउटकम्स सही तरह से प्राप्त करने का। टॉल और बहुत बड़ी बात है। The reports make several recommendations for the governments and civil society, which I will give here. 8 recommendations are put forward for governments. ये जरा देख ले, जरा लंबा होता जा रहा है, फिर पंकज साहब से माफी मांग रहा हूं। 8 सिफारिशें की गई हैं इस रिपोर्ट में इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। अब आप कहीं जाए इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए तो ये देखें कि ये सिफारिशें लागू हो रही है या नहीं। पहली, whether managed by the public or private sectors, all education facilities must be regulated by ministries of education or relevant ministries for inclusive vocational training, development and lifelong learning. This recommendation I submit should apply to regulating all education and training facilities, residential or community-based. Concerned ministries, that is education, rural development, labor and employment, must regulate related institutions instead of Ministry of Social Justice doing it alone. बहुत दिनों से मांग होती रही है कि शिक्षा, एजुकेशन मिनिस्ट्री, विकलांगों की शिक्षा, डिसेबल्ड की एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन भी
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास ही होनी चाहिए। इसमें तो यहाँ कहा गया है केवल एजुकेशन नहीं, बल्कि जो अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, और बाकी जो ट्रेनिंग है वो भी जो भी संबद्ध मिनिस्ट्री है उसके पास रहनी चाहिए। हम इससे एक स्टेप आगे जाके कहते हैं कि केवल इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं, बल्कि बाकी जो हमारी संस्थाएं हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब भी केवल सोशल जस्टिस के पास न रहे, बल्कि संबद्ध मंत्रालयों के पास रहे। नंबर 2, नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए? भेदभाव ना हो किसी तरह, जीरो रिजेक्शन पॉलिसीज, किसी को रिजेक्ट ना किया जाए, एंड रीजनेबल अकोमोडेशन as defined in the UNCRPD must be enforced across the country and at all levels of the education or training systems. तीन चीजें होनी चाहिए भाई, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव ना हो, जीरो रिजेक्शन, विकलांग है तो उसे हटा दो, ऐसा कभी ना हो, और तीसरे रीजनेबल अकोमोडेशन। बहुत बड़ी बात कही गई है यूएनसीआरपीडी में, कभी चर्चा टाइम मिलेगा तो कभी फिर बातचीत होगी रीजनेबल अकोमोडेशन पर, कि उस बच्चे को जो आवश्यक सुविधा, जो विशेष साधन, जो विशेष टेक्नोलॉजी चाहिए, वो भी उसको सुलभ की जाए। नंबर 3, significant investments, human, social and financial must be made in all efforts of inclusive education. तो पर्याप्त आर्थिक साधन, पर्याप्त साधन उपलब्ध किए जाने चाहिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो मानवीय साधन, और चाहे वो टेक्नोलॉजी के साधन। उसके लिए आर्थिक आवश्यक वित्तीय समायोजन होना चाहिए। नंबर 4, टीचर एजुकेशन and curriculum reforms must foster the principles of universal design for learning, including equal access and participation in learning and assessment. Universal design for learning, आपका कोई सेशन भी होगा शायद, उस पर जोर दिया जाना चाहिए, जिससे कि सबको समान पहुंच मिल सके और भागीदारी हो सके शिक्षा और असेसमेंट, मतलब वो जो मूल्यांकन होता है उसमें। नंबर 5, diversity of languages including national sign languages and tactile sign languages and modes of communication must be used throughout the system with by teachers who are fluent in these subjects. I strongly urge that good knowledge of Braille must also be added here to sign language. आपने मैडम उबातुली से सुना था कि उनके यहाँ साइन लैंग्वेज है, टेक्टाइल साइन लैंग्वेज है। इसी तरह की जो लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट है साइन लैंग्वेजेस की, उसको समुचित प्रयोग होना चाहिए जहां आवश्यक हो, और हमने इसमें निवेदन किया है कि साइन लैंग्वेज ही नहीं, जहां तक हो सके जितना आवश्यक हो उतने ही ब्रेल शिक्षण भी उपलब्ध होना चाहिए। नंबर 6, data must be consistently collected, desegregated to the extent possible by disability type, and analyzed to ensure adequate monitoring and resourcing of inclusive and equitable quality education. Data collection, आंकड़े होने चाहिए। आज हमारे पास आंकड़े ही नहीं है। 2001 में दृष्टिबाधितों की जनगणना में एक संख्या आई थी, 2011 में वो संख्या 2001 के मुकाबले आधी से भी कम रह गई। तो सही आंकड़े मिलना जरूरी है। Number 7, in decentralized systems, a consistent set of regulations, accountability mechanisms, and resource planning for inclusive education at the different levels of government must be ensured. My submission is that this is especially relevant to ensure that work at the district or grassroots levels be made clearly accountable and is carefully monitored in a large country like ours, especially relevant these days. Decentralization होना चाहिए। Decentralization क्या होता है? विकेंद्रीकरण होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जरूरी नहीं है कि जो अगर पढ़ता है कोई बांदा में, जिले में, तो उसकी सहायता के लिए लखनऊ पहुंचा जाए या दिल्ली आया जाए। जहां पर शिक्षा कार्यक्रम है वहीं पर
उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए और उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए. Number 8, communities, families, parents and students themselves must be active participants in monitoring and evaluation activities. पेरेंट्स भी और बच्चे भी क्लोजली इन्वॉल्व होने चाहिए कि क्या प्रगति हो रही है, उसको देखने के लिए नहीं, उसको मॉनिटर करने के लिए, उस पर निगरानी रखने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए. The report has 2 specific recommendations for the civil society. ये तो सरकार के लिए सिफारिशें थी. थोड़ा और धैर्य रखिए, 2 और सिफारिशें आपके सामने लाना चाहता हूं जो सिविल सोसाइटी के लिए है. पहली है, the important roles of OPDs must be recognized and promoted by all, including DPOs themselves. OPDs मतलब organizations of persons with disabilities. OPDs क्या है? Organizations of persons with disabilities. विकलांगों के संगठन, जैसे मेरा संगठन है, जैसे मेरे बाद भूषण पुरानी साहब बात करेंगे, उनका संगठन है. जैसे बहुत अर्थों में अमर ज्योति भी हम ओपीडी जैसा ही मानते हैं. All OPDs must be enabled to have a decisive role in OPDs को निर्णयात्मक भूमिका मिलनी चाहिए. काहे में? In policy development, accessibility matters, effective implementation, teacher preparation, parent support, providing psychosocial support, etc. यहाँ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, I would add here that Article 4.3 of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities enjoins upon state parties, that is governments, to closely consult with and actively involve persons with disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations in all decision-making processes on issues concerning them. Such must be the strength and status of our disability organizations. And that assumes added relevance in the present day COVID-19 scenario. United Nations Convention जो हमारा है, उसके 4.3 आर्टिकल में लिखा है कि सभी सरकारों के लिए ये लाजमी होगा कि वो विकलांग व्यक्तियों और उनके संगठनों को क्लोजली कंसल्ट करे, उन्हें इन्वॉल्व करे सभी विषयों पर जो कि विकलांग व्यक्तियों से संबंध रखते हैं. तो इतना ज्यादा महत्व दिया गया है विकलांग व्यक्तियों के संगठनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर. और दूसरी सेकंड रिकमेंडेशन इज डोनर्स एंड एक्सटर्नल फंडिंग सोर्सेज. NGOs must comply with SDG 4 and the CRPD by making all available, ध्यान दीजिएगा, they must make all available funds contingent on disability inclusive provisions. ये जो सहायता देते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन, इनके लिए ये अनिवार्य हो जाना चाहिए कि उनकी सहायता का, आर्थिक सहायता का कुछ अंश डिसेबिलिटी इंक्लूसिव प्रोविजंस पर हो, ऐसी योजनाओं पर हो, ऐसे कार्यक्रमों पर हो जिसमें डिसेबल्ड लोगों को भी सम्मिलित किया जाए. These then, friends, are the 2 crucial reports just launched. The core messages of both reports are aligned and put learner diversity at the heart of inclusive education. You might say that I am perhaps digressing from my assigned sub-theme. But friends, my submission is that understanding contemporary issues as brought out in these documents is essential to a proper appreciation of the challenges ahead. आप कह सकते हैं कि ये कहां से तुम बीच में ले आए, तुम्हारे विषय में कहां से आ गया ये सब बातें. मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि ये आजकल के बर्निंग इश्यूज हैं, इनको समझना आप सबके लिए, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो स्कॉलर्स हो, चाहे वो हो जिन्होंने 2019 में ही स्पेशल बीएड किया है, सबके लिए आवश्यक हो जाता है. Now, the COVID-19 pandemic has revealed and accentuated inequalities between learners, but has also drawn attention to the need and possibility of doing things differently too, if required. So, to my mind, the most COVID-19
post-emerge challenge for inclusive education of children with disability is not whether, but how to improve. चुनौतियों की बात की गई थी ना, मेरे विचार में सबसे पुरानी बड़ी चुनौती ये नहीं है कि क्या सम्मिलित किया जाए विकलांग बच्चों को कोविड-19 का सामना करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों में। चुनौती ये है क्या नहीं, कैसे सम्मिलित किया जाए। We have to ensure that these children get the benefits of real inclusion and not just remain passive listeners. I am reminded in this connection of the following statement occurring in para 11 of the CRPD Committee's General Comment number 4 on inclusive education. That said, placing students with disabilities within mainstream classes without accompanying structural changes to, for example, organization, curriculum and teaching and learning strategies does not constitute inclusion. Quotation closed. Incidentally, this CRPD committee is a grouping of 18 elected members which issues general comments on various UNCRPD articles and examines country reports. So, in the present COVID-19 scenario also, we have to take into account necessary adjustments and accommodations required for genuine inclusion. भूषण पुरानी साहब थोड़ा समय और दीजिएगा। तो ये आवश्यक है कि आज का जो आप प्रबंध करें विकलांग बच्चों तक पहुंचने का, वो ऐसा हो जिसमें केवल बच्चा एक घर में अपने कोने में बैठे आवाज ही ना सुने, बल्कि उसका पार्टिसिपेशन हो। क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है कि जब तक पूरा पार्टिसिपेशन ना हो विकलांग बच्चों का, जब तक उनके लिए आवश्यक विशेष सुविधाओं और आयोजनों की व्यवस्था ना हो, तब तक इंक्लूजन संभव नहीं है। तो पहली चुनौती तो ये है कि हमें अपने शिक्षा के कोविड-19 के बाद जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं सब में सही तौर से दृष्टिबाधित बच्चों को सम्मिलित किया जाए। And forgive me, at this stage, I will talk on school education and for visually impaired children. मैं इस स्तर पर स्कूल शिक्षा की बात करूंगा, हायर एजुकेशन की बात नहीं कर पाऊंगा और विशेष रूप से दृष्टि विकलांग बच्चों के संबंध में चर्चा करूंगा। Now there is also the oft quoted challenge of the circular relationship between poverty and disability. That is, poverty being the cause and consequence of disability and vice versa. We have to keep in mind the vulnerable socio-economic status of our groups, which places high-tech and costly arrangements beyond their reach. सामाजिक आर्थिक स्तर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। गरीबी और विकलांगता का बहुत पुराना संबंध है। Then there is also the question of identifying accessible and appropriate technology to be used for reaching educational content to our children. And I here refer to children with visual impairment in particular. क्या टेक्नोलॉजी यूज होगी जो सबको समझ में आ सके, जो हमारे बच्चे आसानी से इस्तेमाल कर सके, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। There is also the challenge of providing psychosocial support on matters relating to mental health in these days of pandemic crisis. Psychosocial support, वो बच्चे जो घर पे बैठे हुए हैं, जिनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, उनको क्या समर्थन, क्या सहायता आप दे सकते हैं? So how do we begin? Of course, online teaching strategies would need to be deployed. क्या कहाँ से शुरुआत होगी? ऑनलाइन टीचिंग की विधियां देखनी पड़ेगी। To come up with workable answers, we need practical action-based initiatives. The objective must be to decide the methods and technologies involved in planning and transaction of lessons relating to different school subjects. Some critical questions would need to be addressed, such as महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें ढूंढने हैं। क्या प्रश्न हैं? Are there subject areas in which lessons can be delivered without any modifications? If so, these need to be listed. क्या ऐसे lessons हैं
जो बिना किसी संशोधन के दिए जा सकते हैं, क्या है वो अगर है? What specific lessons would require pedagogical and technological modifications? These two would require systematic adaptation related initiatives. क्या कौन से lessons होंगे स्कूल की पाठ्य पुस्तकों के जिनमें कुछ संशोधन की आवश्यकता होगी? कैसा संशोधन होगा? How are such modifications to be organized? How do we transact lessons involving the use of some assistive products on the part of teachers and students? Subjects like मैथमेटिक्स, साइंस, जियोग्राफी, ये जो विषय है जिनमें कुछ डिवाइसेस की आवश्यकता होती है, मैथमेटिक्स में टेलर फ्रेम की, एबकस की, जियोग्राफी में ग्लोब्स, मैप्स की, साइंस में कुछ उपकरणों की, वो कैसे होगी? एंड देन व्हाट अबाउट टीचिंग एक्सपेंडेड कोर करिकुलम स्किल्स इंक्लूडिंग ब्रेल? और फिर जो वन टू वन टीचिंग होती थी, एक्सपेंडेड कोर करिकुलम, ईसीसी स्किल्स कहते थे, उनका शिक्षण कैसे हो? On the administrative side, प्रशासनिक स्तर पर, can there be any focal point, e.g., a diet in each district to plan and supervise action for making teaching learning process meaningful? क्या ऐसा हो सकता है कि हर जिले में एक हम फोकल पॉइंट बना दें, केंद्र बिंदु बना दें? मान लीजिए एक डाइट को ये जिम्मेदारी दे दें कि ये सब आयोजन करे विकलांग बच्चों के लिए, विशेष रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए, उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करें. What are the possible roles of special educators? जो special educators हैं, उनकी क्या भूमिका होगी? How can required data be quickly collected regarding the present situation of children with disabilities in a district with reference to technological devices, textbooks in accessible formats, and family support available with them? आंकड़े चाहिए जिले में कितने विकलांग बच्चे हैं, कितने तो दे जाएंगे हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन वाले, उनमें से कितनों के पास इस समय अपनी पाठ्य पुस्तकें हैं, कितनों के पास लेखन सामग्री है, कितनों के पास फैमिली की सपोर्ट अवेलेबल है? What would be the most appropriate technology for transacting lessons by teachers and students with disabilities to provide feedback? Feedback बच्चे कैसे देंगे? Can some suitable modules be developed? इस सब के लिए क्या कोई suitable modules विकसित किए जा सकते हैं? And then how are we to interact with younger children, especially those belonging to primary classes? These are some issues and challenges to which we need workable answers early. ये सारे सवाल हैं. I have 4 recommendations to make quickly. Some work has already been done in this direction, but it has been rather sporadic and disconnected. So recommendation number one, perhaps our NIEPVD in conjunction. I think NIEPVD director, sir, is probably not with us, but NIEPVD in conjunction with the concerned department of NCERT and in partnership with leading blindness organizations could take up a short research project for the purpose in the case of visual impairment, and the same exercise could be planned and organized by other NIs for other disabilities. For, after all, initiating need-based research and development activities used to be the main mandate of our national institutes. I hope our new director at NIEPVD could kindly look into this and lead the way to open up new horizons of opportunities during these difficult times also. Secondly, perhaps some online workshops with targeted themes and audiences could be conducted to work out required strategies as a part of the suggested research project. Thirdly, I would strongly urge that organizations of persons with disabilities must be closely associated in all our initiatives to cope with these challenges as per the related UNCRPD article. Fourthly, the expertise, experience, and resources available with so many of our so-called special schools must also be fully tapped. Both inclusive education systems and special schools can and should coexist as mandated under Section 31(1) of our RPWD Act
2016. 4 मेरे सिफारिशें हैं यहाँ पर, वैसे तो और भी बहुत हो सकते हैं। सबसे पहले एक ये है कि NIEPVD, जरा आदत पड़ी हुई है उसको कहने की NIVH, क्या हो सकता है कि एक लघु अवधि का रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करे, उसमें भागीदारी हो NCERT के भी संबद्ध डिपार्टमेंट की, जिसकी फॉर्मर हेड प्रोबेबली कल बात करेगी, और उसमें पार्टनरशिप हो लीडिंग NGOs की, और वो इन सभी विषयों पर, सभी बातों पर कुछ कार्य करके एक रिपोर्ट सामने लाए। दूसरे, इसी रिसर्च प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुछ निश्चित वर्कशॉप्स भी आयोजित की जाए, जिसमें क्या स्ट्रेटजीज रिक्वायर्ड हैं वो भी निर्धारित की जाए। तीसरे, इन सभी कार्यों में जो विकलांग व्यक्तियों के संगठन हैं, जो जो बड़े संगठन हैं, उनको हर स्टेप पर, हर लेवल पर संबद्ध किया जाए। और चौथे ये कि हमारे जो स्पेशल स्कूल्स कहलाते हैं, उनके पास अभी भी बहुत एक्सपर्टीज है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत रिसोर्सेज है, उनका अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए इन सब कार्यों में, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल स्कूल्स को साथ साथ रहना है, जैसा कि हमारे RPWD एक्ट 2016 में भी कहा गया है। माफ कीजिएगा, समय बहुत हो गया। अक्कद साहब और बाकी साथियों, विशेष माफी एक बार फिर भूषण पुरानी साहब से भी। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर हियरिंग मी पेशेंटली, एंड I wish you all the best in all your future endeavors. Thank you so much. Thank you so much, मित्तल जी. मैं आई एम जयश्री कुमार फ्रॉम साइट सेवर्स, भोपाल ऑफिस से बोल रही हूँ. It was a very insightful presentation you have done, and your very valid points you have really put forth during this webinar. And you also mentioned that NIEPVD and NCRT and also leading organizations like Sight Savers or other blindness organizations should come forward and undertake research. Can you suggest what type of research area should be taken up in terms of during COVID-19? Because online education is one of the area which is really coming up, and there are very few people who have come up with studies. So would you suggest what type of research areas we should take up? A very good question. The point you have raised is very valid. Yeah. We can't go into details of research issues to be taken up, but the focal point has to be, how do we make online teaching for children with sensory impairment to begin with children with sensory impairment. When I said NIEPVD, I was only talking of visually impaired. How Yeah. can this online teaching be made really effective? A. B. Some sporadic efforts have been made. One special school I know of in Delhi, they have done something. Matuli madam was saying they have done something. If there are some such modules available, those should also be looked at and see if there are some best practices or lessons to be learned. Yeah. Basically, the research we want should be specifically targeted. Research issues should be framed. To me, these are just 3 to begin with. What Yeah. technology to be used? WhatsApp, cloud storage, or whatever. Secondly, how are teachers going to be prepared to address the special needs of these children? Can special teach educators join in this? And thirdly, get out of this research some, just as we call some, when we were teaching B.Ed students, we used to have model teaching lessons. Yeah. We used to deliver lessons for our student teachers to see and emulate. Similarly, some such modules in specific subjects can be developed. And especially, let me add one more. What about ECC skills, Yeah. which is done one-to-one? Can we do something, or shall we procrastinate action for some time? These are 3-4 issues. When an NIEPVD sits down about it, they could probably have a small group and have an online discussion, work out details. Thank you. So thank you, sir. And
I would now request our Dean ma'am to kindly propose the vote of thanks. Professor Aarti Kaul ma'am. संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगी। मैंने इसलिए बीच में जो श्री अजय कुमार मित्तल जी के बीच में अपना थैंक्स नहीं बोला और मैंने सोचा इकट्ठा बोलेंगे, सो दैट आई वांटेड टू से वन टाइम। दोनों स्पीकर्स ने, ऑनरेबल स्पीकर्स ने, दे हैव रेज्ड सर्टेन पर्टिनेंट क्वेश्चंस, they have made us aware about the legal provisions, they have shared their thoughts about how to improve on the education और क्या रिसर्च चल रहा है, क्या प्रोविजन है, क्या हम कर सकते हैं। We as a teacher educational institute in the school of Sharda University would like to get associated with these organizations to help in the process of getting inclusive, to make our education inclusive. So thank you sir, thank you। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आप हमारे साथ बहुत देर के साथ जुड़े रहे और आपने अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। और ये एक इंफॉर्मेशन कैंपेन भी बननी चाहिए फॉर पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ दीज रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे श्री अजय कुमार जी ने ये जो यूनेस्को की रिपोर्ट एज रिसेंट एज 23rd and 25th of June 2020 वो हमारे सामने लाई, उनके रिकमेंडेशन को शेयर किया, साझा किया। मे बी आफ्टर 6 months we might have read the report, लेकिन उनको साझा किया, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को साझा किया, उसके लिए सर आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद इसलिए भी जो कि आपने पर्टिनेंट क्वेश्चंस उठाए हैं रिगार्डिंग how to go forward with inclusive education, especially during COVID times। जो उसके लिए भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं ताकि ये जानकारी disseminate हो, people become aware, we as the stakeholders of education become aware about these things and propagate it। और मैं स्पेशल मेंशन यहाँ करना चाहूंगी डॉक्टर पंकज कुमार का, जिन्होंने की ये सिंपोजियम विद NIEPVD पॉसिबल बनाया। डॉक्टर पंकज कुमार सर आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप हमसे लगातार, हमारी फैकल्टी मेंबर डॉक्टर रिंकल शर्मा से लगातार जुड़े रहे, आपने हमें बहुत सा सहयोग किया इस to make this thing happen, to make this event happen, and it's because of you that we were exposed to such brilliant minds who are doing a lot in the area of inclusive education। और मेरा आभार आपको भी और आपकी संस्था को भी, जिन्होंने शारदा को अपना एक पार्टनर चुना और ये inclusive education का सिंपोजियम करने में हमारे साथ हाथ बटाया। So I again thank all of you who are sitting here. You have been waiting patiently and listening to all the experts patiently. I again thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am.